Welcome back to this session. So today in this session we will learn how to find shear force and bending moment diagram of a simply supported beam. So henceforth we will be solving only the numericals. So let us get going with the first numerical. So let me read the first question. A simply supported beam of span 5 meter carries 2 point loads of 5 kN and 7 kN at 1.5 meter and 3.5 meter from the left-hand support respectively. Draw shear force diagram SFD and bending moment diagram BMD showing all the important values. A beam is simply supported. So there is a beam. There is a beam. It is simply supported. Right? And the span of this beam is 5 meter. So it is 5 meter span. Let us name this as A and B, right? Or क्या बोल रहे 2 point loads. There are 2 point loads of 5 kN and 7 kN at 1.5 and 3.5 meter from the left hand support. So this is the left hand support. From left hand support, one load of 5 kN is at 1.5 meter. So from here we have one load which is 5 kN and this distance is at 1.5 meter. And then next, which is 7 kN load. So 7 kN load. 7 kN load is at a distance from this point till here from left hand side. It is at a distance of 3.5 meter long. Okay, so now for this we need to draw shear force and bending moment diagram. So I'll just draw a line here. Okay, line here. Now let us find one by one. The first step is to find reaction. So first one, we need to find reactions. Okay, now for this simply supported beam there will be reaction at here at this A point. At the supports there will be reaction. So there will be reaction at RA, support at A, and RB, support at B. Now let us name this point as C and D. Okay, this point where 5 kN load is acting, let us name this C. This point where 7 kN load is acting, this point as D. Now let us find the reaction. So remember, in reaction the forces that is going from up to down will take it positive, and the forces that is coming from top to bottom will take it as negative. So remember this sign convention. So as we start, we will start from this point here. Okay, so at this point A we have reaction RA. So RA is going from bottom to top, so we have positive RA. We'll take summation of forces in x direction is equals to 0. Okay, then we have to go in x direction now, totally in x direction. So because we have taken summation of forces in x direction. Now as we move from A to B, first force that is coming is reaction RA. So reaction RA कहाँ से जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है. तो ये क्या है? नीचे से ऊपर वाला positive. So we have RA positive. Next हम A point पे ख़त्म हुआ. अब आगे चल के यहाँ पर जाएंगे तो we have 5 kN load here. अब ये 5 kN load कहाँ से आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है. तो this is minus 5 kN minus 5. Then next we have 7 kN load which is also coming from top to bottom. So we have minus 7, and at the end here we have B which is going from bottom to top, which is plus RB equals to 0.
right? Now we will keep all the like terms together. RA and RB, they are like terms, so we'll keep it together. RA plus RB will be equal to, अगर ये -5 और -7 को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बी 5 + 7. सो वी हैव RA plus RB equals to 12 kilonewton. Right? Now हमें we have found this equation. Still अभी हमें RA and RB find करना है. तो let us find moment now. Moment. Let us find summation of moment about A is equals to 0. What is moment? Moment is nothing but it is force into the perpendicular distance. Force into the distance. तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? Force into distance जब हम करते हैं तो हम ये point से, see now मैंने I have said moment about A. तो A point, my reference point is A here, this A here. Okay, now for this my force will be equal to, I'm going from A, from this point to B, I'll go till here. So I'll have at A, the first force that I have at A is RA, right? And I'm starting from A point only. मैं जब A point से शुरू करती हूँ तो that point will be, initial point is A, so वो point will be 0 because I'm starting from A point. Now whatever forces direction, अब moment के लिए हमें clockwise and anti-clockwise direction देखना पड़ता है. जो भी forces clockwise direction पे जाते हैं उसको हम प्लस लेंगे, और जो भी forces anti-clockwise direction पे जाते हैं उसको हम माइनस लेंगे. Okay, now see here, next force we have found for RA here because ये starting point पे है तो उसका distance 0 होगा. Next we have 5 kilonewton load coming. अब ये 5 kilonewton load कैसे act हो रहा है? This 5 kilonewton load A की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा reference point A है. तो A की तरफ जाने के लिए ये इसका कैसे डिफ्लेक्ट होके जाएंगे? This will go in this manner. 5 kilonewton load ऐसे जाएंगे towards A. तो ये कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है? ये clockwise डायरेक्शन पे जा रहा है. तो in clockwise, if it is clockwise direction, it is plus. So I have plus force is 5 into, now what is the distance from C to A? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस है? 1.5 डिस्टेंस पे है. So into 1.5. Again similarly 7 kilonewton load. Next we have 7 kilonewton. 7 kilonewton भी towards A कैसे जाएंगे? It will go in this direction. ये कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है अभी? Clockwise direction. So clockwise है तो it is plus 7 into distance क्या है? यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक distance given is 3.5. So 7.7 into 3.5. Next we have here the next force is directly at B. अब ये reaction RB कैसे जाएंगे? ये towards A, ये ऐसे जाएंगे, right? तो अब ये कौन से direction पे जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन पे जा रहा है. तो ये एंटी क्लॉकवाइज पे है तो क्या होगा? इट इज एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस RB इनटू डिस्टेंस क्या है? RB से A तक पूरा डिस्टेंस इट इज 5 मीटर. सो वी हैव 5 इक्वल्स टू 0, राइट? अब ये 0 हो जाएगा. अब 5 इंटू 1.5 कितना होगा? 5 इंटू 1.5 विल कम इक्वल टू 7.5 plus 7 into 3.5 will be coming equal to 24.5. अब ये माइनस को अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया है तो इट विल बी इक्वल टू प्लस RB. तो ये क्या होगा? RB इंटू 5 विल बी इक्वल टू प्लस 5RB. तो इन दोनों को फिर हमने प्लस किया तो इट विल बिकम इक्वल टू 32 equals to 5RB. Okay, now from here RB will be equal to 32 divided by 5. It will be coming equal to 6.4 kilonewton. So here RB is equal to 6.4 kilonewton.
Okay, now we can find RA easily. From this equation here we can find RA, which will be coming equal to RA equals to 12 minus 6.4 will be coming equal to 5.6 kilonewton. So this is the reaction. So यहाँ पर कितना आ रहा है 5.6 kilonewton. So we have these forces here. Now next let us find shear force. So let us find shear force calculation. Now shear force is nothing but this addition of all the forces. So shear force is addition of all the forces. Okay, अब इस पे भी the forces that are running from bottom to top we will take it positive, and the forces that are coming from top to bottom we'll take it as negative. So this is the sign convention. Now let us first find shear force between A and C. So first we have shear force between A and C. तो इसके लिए let us take force. F signifies force between A and C will be equal to, अब ये A और C के बीच में जितना भी forces आ रहा है उसको हम एडिशन ऐड करके लेके जाना पड़ेगा, और जो भी आपका A पे आएंगे वो फोर्स आप लेंगे, और बीच पे जो भी अगर कोई भी बीच पे लोड लग रहा है वो आप लेंगे, और जो C के ऊपर आते हैं इसको हम नहीं लेंगे. तो अभी यहाँ पर क्या है, C के ऊपर 5 kilonewton लोड लग रहा है, तो वी विल नॉट टेक दिस 5 kilonewton लोड विच इज़ कमिंग on top of this C. So what do we have? We have at from here to here the addition of forces will be, first force is reaction RA. So reaction RA is going from bottom to top, so this becomes plus. So we have plus RA, right? And in between, are there any forces in between from A to C? There are no forces, so we just have plus 5 kilonewton force in between the section A and B, A and C. तो ये फोर्स 5 kilonewton जो है A से C तक, ये 5 kilonewton कांस्टेंट रहेंगे. ओके, इट विल रिमेन कांस्टेंट. नाउ लेट अस फाइंड सेकेंड shear force. Shear force between the section C and D. अब यहाँ पर force at C and D will be equal to, now similarly here जो C पे आएंगे वो लेंगे, बीच पे अगर कोई लोड लग रहा है तो वो लेंगे, और D के ऊपर जो आ रहा है वो हम नहीं लेंगे. तो अभी तक ये C तक जो पहले A एंड C के बीच पे आया है उसको हमें ऐड करके लेके जाना पड़ेगा. सो वी ऑलरेडी हैव प्लस 5.6 kilonewton here, right, till C. अब C के ऊपर 5 kilonewton लोड लग रहा है, तो वी नीड टू कंसिडर दिस वन बिकॉज ये C के ऊपर आ रहा है यहाँ पर. सो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इट इज़ -5. और नाउ C और D के बीच पे कोई लोड है, देयर इज़ नो लोड इन बिटवीन C एंड D, सो इट विल बी इक्वल टू 0.6 kilonewton. So this is the shear force between C and D. Now third one, we have shear force between D and B. अब ये जो shear force हम लास्ट सेक्शन के लिए फाइंड करते हैं, इस पे इट शुड कम इक्वल टू माइनस RB. RB कितना है, 6.4 है. तो हम आगे से प्लस करते करते लास्ट पे पहुंच जाते हैं, तो लास्ट पे यू शुड ऑलवेज गेट माइनस RB. ओके, RB कितना है यहाँ पर 6.4, तो हमें यहाँ के पूरा एडिशन करके हमें आंसर -6.4 आना चाहिए. सो लेट्स चेक. F of D and B will be equal to, यहाँ तक कितना आया था 0.6. अब
आर देयर एनी फोर्सेस ऑन टॉप ऑफ डी? डी के ऊपर फोर्स है कोई है यहाँ पर 7 किलो न्यूटन, राइट? सो इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो -7. सो आर देयर एनी फोर्सेस इन बिटवीन डी एंड बी? डी एंड बी के बीच में कोई फोर्स है? देयर इज नो फोर्स इन बिटवीन डी एंड बी, इट इज एम्प्टी हेयर. सो माइनस एम्प्टी हेयर, सो नो फोर्सेस, राइट? सो बी के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो रिएक्शन का आ रहा है और वो हम नहीं लेंगे. तो 0.6 minus 7 will come exactly minus 6.4 kilonewton, which is equals to minus RB. तो हमारे यहाँ पर RB 6.4 आया था, तो लास्ट पे शेयर फोर्स भी इन दोनों के बीच के सेक्शन पे -6.4 आया. तो दिस इज राइट. आपका कैलकुलेशन सही है. यू कैन क्रॉस चेक योर कैलकुलेशन इन दिस मैनर. नाउ हमें पूरा शेयर फोर्स मिल गया है, तो लेट अस ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम. तो मैं ये क्या करती हूँ, ये लाइन यहाँ से मैं खींच लेती हूँ. आई विल एक्सटेंड दिस लाइन. Okay, now to draw a shear force diagram there are certain rules, so I'm gonna show you those certain rules. So this is the line. Okay, above this line let us first mark the forces that has come in between. तो between ये point मेरा A point है. This is my B point, C and D, right? So between A and C कितना आया है force? 5.6 kilonewton. So from A to C it will remain constant. So let me mark it as A to C. Okay, so I'm gonna join these 2 points now. A पे 5.6 आया तो here 5, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट टिल सी तक ये 5.6 रहेंगे. सो ये फोर्स कितना है? 5.6 किलो न्यूटन, राइट? और नेक्स्ट आई हैव बिटवीन सी एंड डी के बीच में कितना आया है? 0.6. तो ये सी पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है लोड अभी. तो कितना हुआ है? ये सी पॉइंट पे 0.6 और ये डी तक कांस्टेंट रहेंगे. सो फ्रॉम हेयर till here we have 0.6 kilonewton. So from C to D we have constant 0.6 kilonewton load. Now suddenly upon reaching between D and B it is decreasing, it is going to minus. So ये line, the forces that are drawn above this line are all positive and the forces that are drawn below this line will be negative. So here it is coming negative, so it will go to negative here. So let me mark, let this be from here, this line downward it will be negative, so negative 6.4 till B. So from here it is suddenly dropping, so we have minus 6.4 and this will be minus. This is 6.4 kilonewton. So let me shade this. So this is my shear force diagram. Okay. Now let us find bending moments. Okay, so now let us find bending moment calculation. Okay, now for bending moment, for simply supported beam के लिए सपोर्ट कहाँ पर है? A और B पे है. तो for simply supported beam at A and B moment will be equal to 0. So moment at A equals to moment at B will be equal to 0. ये केस सिर्फ simply supported के लिए है. Now हमें moment at C फाइंड करना है.
तो मोमेंट क्या है? मोमेंट इज फोर्स इनटू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट? दिस इज द मोमेंट. और जो फोर्सेस क्लॉकवाइज जाते हैं उसको हम प्लस लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं उसको हम माइनस लेंगे, राइट? तो फिर यहाँ पर सी के लिए, सी तक हमें मोमेंट फाइंड करने के लिए हम ए से लेकर सी तक जाएंगे. तो ए से लेकर सी तक जाने के लिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक एक रिएक्शन आर ए लग रहा है और आर ए रिएक्शन सी की तरफ कैसे जाएंगे? इसके तरफ सी की तरफ ऐसे जाएंगे, राइट? इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो इन दिस डायरेक्शन जा रहे थे. तो कौन से डायरेक्शन पे? इट इज़ गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज़ पॉजिटिव. सो 5.6 into what is the distance? A से C तक 1.5. So 5.6 into 1.5 will be coming equal to 8.4 kilonewton meter. kilonewton force का ये force और and meter is this 1.5 distance. Now similarly let us find moment at D. Moment at D will be equal to, अब हमें यहाँ तक जाना है, ओके? यहाँ तक जाने के लिए A से हम यहाँ तक जाएंगे. we are going from left to right, ओके? तो A, C और D यहाँ तक पहुँचना है. तो पहले फोर्स कौन से आ रहा है? A, आर ए फोर्स, आर ए जा रहा है वहाँ उसके तरफ. तो कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है? ये अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे. और सिमिलरली ये यहाँ का C. तो पहले हम ए का कर लेंगे. सो आर ए का फोर्स 5.6 इंटू, अब ए से डी तक डिस्टेंस कितना है? द डिस्टेंस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इज़ 3.5 मीटर. सो इंटू 3.5. नेक्स्ट फोर्स सी, ओके? सी से वो कौन से डायरेक्शन पे जाएंगे? ये आप ये डी के तरफ ये डायरेक्शन पे जाएंगे, राइट? तो ये कौन सा डायरेक्शन है? इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स -5 इंटू व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर? सिर्फ इतना डिस्टेंस कितना है? सी से लेकर डी तक. अगर हमने माइनस किया तो हमें मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो 3.5 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 2 meter. So the distance from C to D is 2 meter. So 5 into 2. So this will get 5.6 into 3.5 minus 5 into 2 will be coming equal to 9.6 kilonewton meter. So this is the moment. Now let us draw the bending moment diagram. So again I make a straight line, right? Or at A it is 0 and at B it is 0. Now at C point, this is my A point, this is my B point, and C and D point, right? अब C पे कितना आया है? 8.4 kilonewton meter. So at C I have 8.4 kilonewton meter and at D 9.6, थोड़ा सा बड़ा. तो let us join this line. So at this point it is 8.4 kilonewton meter and at this point 9.6 kilonewton meter. और ये सब लाइन के ऊपर है तो ये पॉजिटिव पे आएंगे. So this is your bending moment diagram. So I hope this numerical is clear. Let us solve the second numerical. Let's solve the second numerical, and this is the last numerical for this session. A simply supported beam of span 7 meter carries a UDL of 2 kilonewton per meter over 4 meter length from the left support and a point load of 5 kilonewton at 2 meter from the right hand support. Draw SF and BM diagrams. So we need to draw shear force and bending moment diagram. So from this given question, we first need to draw the diagram and then start solving it. So let us get going. Let us draw the diagram. It says a simply supported beam. A simply supported beam. और उसका length 7 meter it is given,
and UDL of 2 kilonewton per meter over a span of 4 meter from left hand side. So from left hand side itne pe 4 meter pe you have UDL acting, and it is acting over 2 kilonewton per meter. Okay, and from right hand side support at 2 meter distance you have 5 kilonewton load acting at 2 meter distance. So let us name this as A, B, C and D. Okay, so this is the diagram. So let us first start by finding the reactions. Number 1, reactions. Remember that forces which are coming from bottom to top will be taking as positive, and top to bottom minus. So we need to find reaction RA here and here RB in here, right? So we have first one RA positive since it is going from bottom to top. Then next we have UDL which is coming from top to bottom, so minus 2. Now the UDL is acting over only a certain span of this beam, so it is acting at only 4 meter length, so we have into 4, right? Then next we have 5 kilonewton load which is acting from top to bottom, so plus 5 kilonewton load. Then we have RB which is coming from bottom to top, so it is plus RB equals to 0. So this is summation of forces in x direction equals to 0. Okay, so now from here if we keep the like terms together, RA plus RB will be equal to, if we send this minus, this is minus here, if we send this minus to the right hand side it will be plus 8, and this minus to the right hand side will again be plus 5. So we have RA plus RB will be equal to 8 plus 5 is 13 kilonewton. And next let us find, now we have found this equation here. Now from this equation we can find RA and RB. The summation of moment about A equals to 0. Now my reference point is this A point here. So what is moment? Moment is nothing but moment is equals to force into the distance, horizontal distance. Now I have RA here, first one, since this is my starting point, so RA and the distance is 0, right? So for this one you have to remember the forces which will be going clockwise direction we take it positive, and the forces which is going anti-clockwise we take it negative. So we have 2 kilonewton load, since this is A is my reference point. Now this 2 kilonewton load should go towards A. So how will it go? It will go in this direction, so what direction is this? This is a clockwise direction, so plus 2 into 4. Okay, the distance, total distance of this UDL is 4. Now this is just my load right now, this is the UDL load. Now what will be the distance? Distance for UDL will be acting at half of its total distance, which will be into the total distance of UDL is 4, and half of 4 will be divided by 2. So this will how the forces will be acting for UDL, force into distance for UDL. Next we have 5 kilonewton load. This will also go towards A, so when it goes towards A, bends towards A, it will go in this direction. So what direction is this? Again this is clockwise direction, so plus 5 into, now what is the distance from here to here? The total distance is, we know that from here to here it is 4, then here 4 plus 2 6, and the remaining here is 1, only 1, so this is 1 meter here, right? So from here to here it is 5 meter, 4 plus 1 meter, 5 meter, so the distance is 5.
Then next we have RB. Now RB will also go towards RA, A point, so it will go in this direction. Now what direction is it going? It is going in anti-clockwise direction. So anti-clockwise is minus RB into the total distance from here to here is 7 equals to 0. Now this is 0, right? So we'll leave it, we'll not write anything. So 2 and 2 cancel. So we have here 4 into 4 is 16 plus 5 is 25 equals to, now I'm sending this minus to the right hand side direction, so it will be plus RB into 7. Now from here I can find RB, so my RB will be equal to 16 plus 25 divided by 7, and 16 plus 25 will be equal to 41 divided by 7, and this will be coming equal to 5.857 kilonewton, and approximately we can take this value equal to 5.86 kilonewton. So we have found RB. So RB is coming equal to 5.86 kilonewton, right? Now next let's find RA. So from here, from this equation here, since we have found RB, we can find RA easily. So my RA will be equal to 13 minus 5.86 will be coming equal to 7.14 kilonewton. So RA is coming equal to 7.14 kilonewton. Now let's find shear force. So shear force calculation. So in shear force calculation, we need to, let us calculate how we can find. So first one, we need to find shear force between A and C. We need to find it between A and C. Now in this case, between A and C, a UDL is running. So we have to take a distance when the UDL starts at this point A, and when the UDL fully runs over this span, and the total span making it to 4 meters. And then we need to find when a UDL fully runs for a total span of 4 meters. So let us find let the first distance be at x equals to 0, which is at this point, when the distance traveled by UDL is just the starting point, which is at this point 0 meter. Force at A, shear force at A at this point will be equal to RA. Again here the forces which are coming from bottom will be taken as positive. The forces that are coming from bottom to top positive, top to bottom negative. So we have forces that is going from bottom to top positive minus a UDL 2, and its distance traveled is only 0. So 2 into 0 will give 7.14 kilonewton at A, right? Similarly at x equals to 4 meter. So when the force travels fully for the whole, so when the UDL travels for the total distance of 4 meter till C, so the force at C will be equal to 7.14 minus 2 into, now its distance will be 4, so 2 into 4. So this will be coming equal to minus 0.86 kilonewton. So this is the force at C when it reaches C. Now to
shear force between C and D. Now in between this point C and D, there are no forces acting in between C and D, so the shear force between C and D will be the last force. How much did we get? We need to keep on adding and take it, so the last force we got was minus 0.86 kilonewton. So it will remain same, since क्योंकि ये C and D के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये सेम ही रहेंगे, और हमें शेयर फोर्स पे पूरा फोर्सेस एडिशन करके लेके जाना है, तो इट विल रिमेन सेम. नाउ द थर्ड वन, shear force between D and B. So D and B. So shear force between D and B will be equal to, लास्ट पे कितना मिला था, minus 0.86. अब जो D पे आ रहा है उसको लेना है, बीच पे कोई फोर्स है तो उसको लेना है, और B पे जो आ रहा है उसको नहीं लेना है. तो D पे फोर्स आ रहा है तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. इससे ऊपर से आ रहा है तो +5. इन बिटवीन भी कोई भी फोर्स नहीं है, so this will be not plus, it is -5. So in between there are no other forces, so it will be equal to -5.86 kilonewton, which is equal to -RB. So at the end we need to find exactly equals to -RB. So we have RB is equals to 5.86 and we are getting -RB here. So our calculation is right. So this is the force between D and B. Now similarly, now let us draw the shear force diagram. Now the shear force diagram will be, this is A point, B point, C and D point, right? So A point पे जब मेरा फोर्स A point पे जब UDL was initially running for a distance of 0 meter, the force was 7.14 at A. So at A force was 7.14, right? और B पे जब C पे जब 4 मीटर का डिस्टेंस पूरा ट्रैवल होते हैं उस टाइम पे कितना आया, माइनस पे. तो ये माइनस पे यहाँ पर जा रहा है, ये लाइन के नीचे जो भी आप ड्रॉ करते हो वो सब माइनस पे है, तो इट इज़ -0.86. So let us join the lines. पहले ये पॉइंट से यहाँ तक जाओ, then from here go to this point at C here, right? Now next from C to D, again from C to D सेम ही है 0.86. so यहाँ से यहाँ तक सेम रहेंगे 0.86, और यहाँ पर पहुँचकर the force is suddenly decreasing more. तो कितना हो रहा है, -5.86. तो -5.86 D से B तक -5.86. सो फ्रॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस पे, राइट? सो दिस इज प्लस हियर एंड दिस इज माइनस एंड माइनस. सो ये पॉइंट कितना है, 7.14 किलोन्यूटन. ये पॉइंट कितना है, 0.86. You don't need to mention minus because यहाँ पर already I have mentioned minus. and ये पॉइंट कितने पे है, 5.86 किलो न्यूटन, right? So let's shade it. So this is your shear force diagram. Now as you can see this point, यहाँ पर सडनली शेयर फोर्स यहाँ पर पॉजिटिव था और सडनली यहाँ से क्रॉस करके नीचे गया है, तो इट इज सडनली चेंजिंग इट्स पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. नाउ दिस पॉइंट हियर, let us name it as E point, and this point here where the shear force suddenly changes its sign from positive to negative is known as point of contra shear. So this is the point of contra shear, and at this point bending moment will be maximum at this point. जहाँ पर शेयर फोर्स का मिनिमम, जहाँ पर से शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव को साइन चेंज करते हैं वो पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट विल कम मैक्सिमम. ओके, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. So for bending moment, for a simply supported beam at supports, it will be
0. The forces will be equal to 0. So moment at A equals to moment at B equals to 0. So moment at C, which is at this point, we need to find moment at this point. So how do we find? Moment is force into displacement. So when we go from this point till here, we have RA, and this RA will be going in this direction, which is clockwise direction. So positive 7.14 into the total distance is 4 meter. Then this UDL towards RA will be going in this direction, which is anti-clockwise direction. So minus 2 into 4 into 4 by 2. So here moment at C will be coming equal to 12.56 kilonewton meter. Okay, so similarly moment at D at this point, moment at D at this point will be equal to, moment at D will be equal to, now we need to go from all the way from here till here. Okay, so this force here will be going clockwise direction, anti-clockwise direction, right? So 7.14 into the total distance from here to here is, from here to here it is 4, from here to here it is 2, so 4 plus 2 6, 7 minus 6 is, so this distance from here to here is 1 meter, right? So from here to here it is 4 plus 1 6, 4 plus 1 5, right? So 7.14 into 5 minus the UDL 2 into 4 into 4 by 2. Now यहाँ तक की UDL लग रहा है. अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे लेके जाएंगे? So I have put this in a bracket plus 1. So this is the distance, this is the force, and this is the distance. So I'm adding up the remaining distance also. So this will be coming equal to 11.7 kilonewton meter. Okay, now let us draw the diagram. Before we draw the diagram, let us also find the moment at this point, E point. This is the point of contra shear, right? So at the point of contra shear, bending moment will be maximum. So how do we find? So we will by similar triangle method. Okay, so यहाँ से मैं ये triangle similar triangle लेके जाऊँगी. So I'll draw a separate diagram. Okay, so from here to here I have drawn this much diagram. From इतना सा diagram मैंने draw किया है, क्योंकि इतने पे हमें solve करना है. तो from here to here the distance is, यहाँ से यहाँ तक का distance कितना है? It is 4 meter. So this is 4 meter, right? This is point of contra shear, which is E point. So this much height is 7.14, and from here to here this much is 0.86. So here to here it is 0.86 kilonewton, right? So अभी हमें ये distance find करना है. तो अगर हमें ये distance मिलेगा तो we can easily calculate the moment at E. So let us keep this distance as x. अभी ये distance हमें नहीं पता. So this distance from here to here will be, अगर ये x है तो total distance is 4. So how much will this distance be? It will be 4 minus x. Now by similar triangle method. So similar triangle method कैसे करेंगे? 7 point, this is the bigger triangle here and this is the smaller triangle. So bigger triangle equals to smaller triangle करेंगे तो what we will get? 7 point bigger triangle का bigger triangle का distance, which is x, divided by its height 7.14 will be equal to the distance of smaller triangle, which is 4 minus x, divided by the height of this smaller triangle 0.86. मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो I'll get 0.86 x equals to 7.14 4 minus x. So I'll be getting this. So
अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.86x इक्वल्स टू 7.14 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 28.56 माइनस 7.14x। अगर मैं ये लाइक टर्म, ये और ये टर्म लाइक है, तो इन दोनों को मैं साथ पे लेके जाऊंगी तो आई विल बी गेटिंग 0.86x प्लस 7.14x। ये इसको मैं उधर लेके जा रही हूँ तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, सो रिमेनिंग क्या है, इतना ही है 28.56। लेट मी सॉल्व इट हियर। सो आई हैव 0.86x प्लस 7.14x इक्वल्स टू 28.56, राइट। सो यहाँ से इन दोनों को प्लस किया तो इट विल बी कमिंग इक्वल टू 8x equals to 28.56. So x will be equal to 28.56 divided by 8. It will be coming equal to 3.57 meter. So the distance from this point till this point is coming equal to 3.57 meter. Let us find moment at E will be equal to 7.14 into the distance is 3.57 minus UDL, फिर से ये UDL E के तरफ, E कहाँ पर है, around this point, right, यहाँ पर है, तो ये पॉइंट पे UDL ऐसे ही जाएंगे, सो इट इज स्टिल गोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो -2 इंटू 3.57 इंटू 3.57 बाई 2, सो दिस विल गिव यू इक्वल टू 12.75 kilonewton meter. So as you can see, at moment at C it was only 12.56, moment at D 11.7, moment at E जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर हुआ, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर हुआ है, वो पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए, तो वी गॉट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट. सो नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. ओके, सो ए एंड बी पे 0 मोमेंट, और सी पॉइंट पे, सी पॉइंट कहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, राइट. मेरा ए बी सी एंड डी, और ये पॉइंट पे मेरा ई पॉइंट है. सो दिस पॉइंट हेयर इज ई पॉइंट, राइट. सो सी पॉइंट पे मोमेंट कितना आया, 12.56. सो यहाँ पर रखेंगे अराउंड हेयर 12.56, और डी पे कितना आया, डी पॉइंट यहाँ पर है 11.7, सो थोड़ा नीचे, राइट. और ई पे कितना आया, ई ये पॉइंट पे है, ई पे सबसे ज़्यादा आया 12.75. नाउ जहाँ पर यूडियल लगते हैं, जब आप वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हो, वहाँ पर पैराबोला आते हैं. इट विल कम पैराबोला, नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट अ पैराबोला, मेक इट पैराबोला. तो यहाँ तक पैराबोला आया, राइट. अब यहाँ से आपका पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, तो पॉइंट लोड पे आपका स्ट्रेट लाइन आते हैं. सो यहाँ से जस्ट गो स्ट्रेट लाइन, थोड़ा नीचे और डायरेक्टली नीचे. सो दिस पॉइंट हेयर इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच इज इक्वल टू 12.75 kilonewton मीटर, और ये पॉइंट पे कितना आया, 12.56 kilonewton मीटर, और ये पॉइंट पे 11.7 kilonewton मीटर, और दिस इज पॉजिटिव. So let me shade it. So this is your bending moment diagram. Okay, so this is it for today's session. I hope this numerical is clear. So I'll see you in next session with more numerical.